नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? व्हाट अ प्लेजर टू बी बैक। 2 दिन ऐसे लग रहा था बहुत लंबे हो गए 2 दिन, है ना। कुड नॉट कनेक्ट विद यू ऑन दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस। और इस 2 दिन में काफ़ी कुछ घट भी गया। वी हैड द इलेक्शन रिजल्ट्स एंड न्यू गवर्नमेंट्स इन ऑल द स्टेट्स, dance of democracy in its true form. But the best part was I was able to get out and take a break from this routine, do some bit of cycling. बहुत लोगों से मिले, ख़ास तौर पे रिलेटिव से मिले, वेटरन से बहुत मिले, बहुत एक्स सर्विसमैन मिले मुझे, जो है आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के। बहुत अच्छा, बहुत बुजुर्गों से मिला मैं। आई मेक इट अ पॉइंट टू सिट विद दी ओल्डर पीपल फॉर सम टाइम। दोज वर 80 प्लस, 90, कोई 100 टच करने वाला है, तो बहुत मज़ा आया। एंड तो आई विल जस्ट शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू. लेट मी रीड सम अमेजिंग मैसेजेस एंड सम ऑफ यू, आप लोगों की इंग्लिश की मुझे दाद देनी पड़ेगी. विमल पटेल, गुड मॉर्निंग. वैष्णवी पाठक, योर क्लासेस आर लाइक कैफीन फॉर आवर ब्रेन. Without it, we are stuck in decaffeinated state of confusion. Bring back the intellectual brew. Amazing. Amazing English. Excellent. Ready to sail on the sea of knowledge and wisdom. Again, Vaishnavi. Manju Sharma, hello sir. Every day you meet queries like how to make better communication, personality, many more. But I want to learn how can I be little Yashmor sir. This is my ambition nowadays. You will be better than Yashmor. ठीक है. Jai Hind. Then Priyanshu, good morning sir. My question is to you is how to overcome bad habit. I always decide that I will not repeat the same habit, but I always fall in that. We are prisoners of our habits sometimes. You have to break this yoke by being mentally strong here. इफ अगर आप हैबिट नहीं चेंज कर पा रहे हो, इसका मतलब आप मेंटली वीक हो कहीं ना कहीं, वो रिजॉल्व नहीं है ना. एंड सम बैड हैबिट्स, द अर्लियर यू गेट रिड ऑफ देम द बेटर इट इज. इस पे AMA सेशन पे भी बात करें. दुष्यंत सोलंकी, ये ऑफर मेरी तरफ से था दिवाली पे. ठीक है, दिवाली पे था ये. सो इट कैन नॉट बी रिपीटेड नाउ. दिवाली होगी ख़त्म, अब जो है नया साल स्टार्ट होने वाला है. बिली फांग, थैंक यू. आदित्य चौहान, गरिश्मा रेड्डी, जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग, वॉचिंग लाइव फ्रॉम AFTC जलाली. वेरी नाइस. जलाली, Bangalore. Garishma, I am coming to Bangalore on 13th for a corporate event, and again coming to Bangalore in January to deliver a lecture at the National Institute of Advanced Studies, which is a very niche think tank institution of great repute. So the 2 visits planned for Bangalore. Ashish Prohit, Jai Hind sir, good morning. Pallav Jha, very good morning sir. My whole college has become a swimming pool. I saw snakes, crocodiles roaming in my college in IIT Madras. Pallav Jha is in Amsterdam. He is from IIT Madras. Cleared NDA, SSB, everything, but could not join due to medical reasons. And IIT Madras में अगर snakes और lizards और ये alligators घूम रहे हैं, crocodiles, so you can imagine the state of Chennai. आगे discuss करूँगा on what is happening in Chennai and what is happening in other cities. Abdul Shahid, Vande Mataram, Jai Hind. Sandeep Singh Yadav, weather is changing, people also changing, but my spirit is as high as before. Thank you. Saket, Utkarsh, Pratham, Vaishali, Kaushish, how was my trip? Was very good. Rupesh Chaudhary, at this stage I am only interested in consistency, stability, respect and loyalty. Arey wah, Rupesh, what is your age? Please let me know. Akshay, Jai Hind, Sumed, Lakar, Akshay Tomar, good morning sir. I am really excited to be here after the break. Looking forward to your session. Thank you. Mohanlal Yadav, Anjali, Nikhlendra, Abudar, Yogesh, Virat, Monu, Pradeep Singh Rathor, Ananya, Rajendra Bishnoi, freelancer, Chandramani, Pamma, Gajendra Bhardwaj, Rishabh Avasthi. So please take a special podcast on surrogate advertisement with specialist in YouTube. Okay, good idea. Sona Boss, Jai Hind, Shatakshi, Lovepreet, Harman, Mohit, Chaitanya, Ravi Gupta. Thank you, Ravi. Vipul Yadav, Inkilab, Vande Mataram,
आई हैव चेंज आवर वेज ऑफ नमस्कार, वेरी गुड। जय हिंद सबसे पहले, उससे हम सब आइडेंटिफाई करते हैं। अजय पंत, हैप्पीनेस कीप्स अस स्वीट, ट्रेल्स कीप अस स्ट्रॉन्ग, सॉरो कीप अस ह्यूमन, डिसिप्लिन कीप्स अस गोइंग, अ वेरी रिफ्रेशिंग गुड मॉर्निंग टू सर एंड एवरीवन। वाह भाई वाह। ऋषभ अवस्थी, 4 conference and 1 4C and 1P recommended by Major General Yashmor, always cricket crime celebrity. Good, Rishabh. Jai Hind. Hello, sir. I'm Vishal watching from Uttarakhand, Dehradun. Sir, you're looking good in Nehru cut. Thank you very much. Anshika, Bashist, Love, Karthik, Raghav, Yogesh, forget and forgive attitude is key to absolutely, totally agree with you, Yogesh. Forget and forgive. हाँ, करेंगे हिमाचल भी, एक्साइटिंग सेशन। एज इज जस्ट अ नंबर, थैंक यू। गजेंद्र वॉचिंग फ्रॉम हरियाणा, वेरी नाइस, राइज एंड शाइन सर। जय हिंद साहब, आई एम रघुवेंद्र सिंह फ्रॉम योर यूनिट, सर आई मिस योर कमांड। ये रघु चौधरी है, ये मेरी कमांड में था जब मैं सीईओ था, तो मिसिंग योर, अपनी कमांड भी ऐसे ही थी, मस्ती टोटल। So we are not meet you physically but virtually meet you every day. So please send our ice cream online virtually. ये लो ice cream. Ice cream पे चर्चा. Why civilian people only know about NDR and the attitude towards CDS entry is inferior. उनको रहने दो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको कुछ पता ही नहीं है। अज्ञान लोगों के साथ बैठने से क्या होगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं। बहुत मिथ है हमारे समाज में। आई एम विपिन फ्रॉम जींद, हरियाणा। माई ND SSB इज़ इन जालंधर ऑन 17 जनवरी। ओके दया सिंह, अच्छा अपने फादर के फ़ोन से कर रहे होगे। विपिन वेलकम। चलो, तो गुड टू सी ऑल, गुड टू सी ऑल। एंड जो टेलीग्राम पे नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है, जींद में भी कई बच्चे मिले सर, हमें तो पता ही नहीं आपका टेलीग्राम का, तो मैं टेलीग्राम का लिंक मैंने शुरू में डाल दिया, फिर से डाल रहा हूँ यहाँ पे। ज्वाइन दिस चैनल बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ चेंजिंग, क्या कहते हैं, वी आर बिजनेस ऑफ चेंजिंग लाइफ्स। ठीक है, चलो, तो इंडियन एक्सप्रेस उठाते हैं सबसे पहले। ये इज़राइल हमास, ये फ्रंट पेज, बट लेट्स कॉन्सेंट्रेट हियर। इज़राइल हमास, द वॉर इज़ नॉट एंडिंग एनी टाइम सून। 2 months, कल 2 महीने हो जाएंगे लड़ाई शुरू हुए। एंड इज़राइल हैज़ ओपनली एडमिटेड, फॉर एवरी हमास फाइटर वी आर किलिंग 2 civilians फॉर एवरी हमास फाइटर के, एंड कहते हैं दिस इज़ ओके इन अर्बन वॉरफेयर। तो अब तो उन्होंने स्कोर देना बंद कर दिया है, मुझे लगता है 20,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बच्चों की बहुत बुरी हालत है, बच्चों की बहुत बुरी हालत है। एंड पब्लिक इन यूरोप, अमेरिका एंड मैनी प्लेसेस आर टोटली अप agitating against this kind of an attitude by Israel and its allies. So Israel pushes deeper into South Gaza as US UN urge civilian safety. अब बोल रहे हैं civilian safety, जब मार दिए 20,000 लोग, अर्ज कर रहे हैं, लेकिन और गाजा छोटी सी जगह है, वहाँ there is no place to hide, no place to shelter. Some of the buildings you see, huge building just collapsed. I have not seen more horrifying images of fighting in built-up areas that I am seeing from Gaza. Hamas missile on October 7 hit Israeli base linked to nuclear program. So this is the news. Also coming to news that Israel को सारा पता था ये होने वाला है, but they chose to ignore it. And also that this entire attack on 7th October by Hamas, they were planning it for years. Britain immigration not so important for you all, but Britain is tightening its rules on immigration very very strongly. तो कुछ तो जो पकड़े जाते हैं इंग्लैंड आते हैं, उनको उठा के एक शिप में वो करके दे आर सेंडिंग टू रवांडा से एक एग्रीमेंट साइन कर लिया इसराइल ने, इंग्लैंड ने, कि जो हमारे आएंगे हम तुम्हारे पास भेज देंगे वहाँ अफ्रीका में, ठीक है। एंड बट नाउ इवन सैलरी कैप लगा दिया उन्होंने, पीपल विथ सैलरी हु गेट जॉब्स इन इंग्लैंड फ्रॉम कंपनीज, तो उन्होंने जो थोड़ा गरीब तबका उसको बोला वी विल नॉट गिव यू वीज़ास, विल ओनली गिव वीज़ास फॉर पीपल विथ हायर इनकम. सो दैट इज़ इज़राइल इंग्लैंड इमिग्रेशन फॉर यू. पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं, लेट्स वेट एंड वॉच. आई होप यू वॉच द पॉडकास्ट ऑन पाकिस्तान विद आलोक बंसल. पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा इसी महीने. And thank you so much for liking the podcast on Sam Manekshaw.
with Rehan Fazal from BBC. I am planning to do another podcast with him, this time on the surrender ceremony. कि सरेंडर हुआ कैसे था, क्यों हुआ. मेरे अपने व्यूज़ हैं, मैं खुद 1 साल बांग्लादेश में रहा हूँ. आई वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम हिम एज अ BBC correspondent, somebody who knows the ground situation, कि how did the surrender take place on 16 December. Now, Telangana has a new chief minister. Other states, people are still guessing. 3 of the states which BJP won. So let's wait and watch क्या होगा. US confirms Deputy NSA raised Pannu issue with Indian officials. So India was warned or told well in time when this case came into the knowledge of the US government and their agencies. Situation in Manipur, not good. Manipur not good. More than 175 officially killed, and 13 more bodies have been recovered after a stand fight, and this is 100 kilometers away from their homes on the Myanmar border. तो ये जो है, yes, these are all men between 17 to 47 years. They're all from Valley, that is Bishnupur, Imphal West, Imphal East and Kakching. तो ये जो है, they're all Methi men in Lethu, forested area not far from Myanmar. तो ये कंडीशन है मणिपुर की. आई डोंट नो, but there's a heartwarming story of leadership. This is Gabbar Singh Negi, who was caught in the tunnel. इनके बारे में Prime Minister also praised him. He is the person who motivated this 40 other miners to stay happy, to do yoga, breathing exercises. He was even wanting to ask कि यार स्कोर बता दो हमें मैच का. तो कहते हैं लोग सोच रहे हैं इनको मरने की नौबत आ रखी है, इसको स्कोर की पड़ी हुई है. So great leadership. And leaders are not people who go to IAS or IMA, NDA. Many of them don't become leaders. They wear ranks, but they may not become leaders. Genuine leaders you'll find in public day life. आपको रोज जिंदगी में genuine leaders मिलेंगे, ठीक है. They may not have any position, but crisis में आते ही they show great amount of skills. Show great amount of skills on leadership. So next couple of weeks when I go to Bangalore, where I'm speaking to the corporate world, and then I'm going to National Institute of Advanced Studies, both the places I will be discussing leadership. कि leadership है क्या, and what is leadership in my parlance. मेरे उसमें walk the talk. Leader should walk the talk. Lecture देने का time नहीं, ठीक है, वो कोई leadership नहीं. Leader is somebody whose actions are visible. Actions are visible to the people. कि हाँ यार तो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ठीक है. बोलना अलग बात है. तो उस पे, and how do you build good teams? How do you build great organizations? How do you have happy people under you? How do you create happiness quotient? ये सब चीज़ों पे बात करूँगा. अब मेरे अपने ideas हैं which are close to my heart. So I don't copy anyone when it comes to leadership. I may have when I was growing up, but over a period of time I made my own way. तो चलो आगे चलते हैं अभी. In the newspaper, एक second. Yeah, here we are. Parliament is in session and debates are going on. We have the Kenyan president here. We have given 250 million line of credit. So what is line of credit? One day I will explain to you. When you give, that means उतने का आप सामान ले सकते हो, उतने की चीज़ें आप ले सकते हो. Services you can take from India. So that is a line of credit given to Kenya. And Saudi Arabia, कल मलेशिया का मैंने बताया था, visa free for 1 month. Saudi visa in just 48 hours for Hajj pilgrimage, जो जाएंगे हज के लिए. Now this is interesting. 22 nations pledge to triple nuclear installed capacity by 2050. India not part of the pact. India was also not part of the pact of 118 countries which signed tripling of the renewable energy, RE. जहाँ RE लिखते हैं इसको renewable energy. Why it is renewable मैं बता चुका हूँ, ठीक है. So this is US special presidential envoy for climate John Kerry at COP28 in Dubai.
सो दिस इज अमिताभ सिन्हा, ही इज कवरिंग कोप 28 विच इज स्टिल गोइंग. देखो 2 दिन के लिए हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं, उसके बाद दिस conference of parties COPE continues because there are many agencies, institutions, universities, intellectuals, environmentalists who are involved in framing other policies. So India CO2 emission may register biggest rise for second year. At the same time हमारा जो CO2 emission है may register biggest rise for second year. तो हमारा पिछले साल भी बहुत ज़बरदस्त राइज था. Now we are along with China, India is one of the biggest emitters of जो है CO2 because facts हैं. We are a growing economy, we are a country which has to pull people out of poverty, and our electricity generation, मैंने दिखाया था आपको, is mostly based on कोल फायर्ड प्लांट, थर्मल प्लांट. जो थर्मल प्लांट हो, जो कोयला की बड़ी बड़ी चिमनी आती हैं. आप जाओगे पानीपत के पास आपको नज़र आएगा, भटिंडा नज़र आएगा, एक दिल्ली में था पहले, वो बंद हो गया है. सो दिस इज हाउ इट इज़. सो दिस विल कंटिन्यू, एंड मुझे नहीं लग रहा कि एनी फेज डाउन ऑफ कोल इज़ पॉसिबल. एट द सेम टाइम द अरब कंट्रीज जो तेल बेच रहे हैं दबा के, जिनकी पूरी इकॉनमी, उनकी लाइफ चेंज होगी दुबई में और अबू धाबी में और ओमान में और कतर में, ईरान में, मतलब देयर लाइफ हैज चेंज बिकॉज ऑफ ऑयल. वो भी कोई ऑयल का प्रोडक्शन कम नहीं करने वाले. इनफैक्ट द साउथ यूएई हेड हु इज हेडिंग दिस कॉन्फ्रेंस, ही सेड कि आगे दिखाऊंगा उन्होंने क्या बोला है कि प्लीज़ रीड साइंस, फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट द ओनली रीज़न फॉर एमिशंस. चेन्नई टोल राइजेस, ये चेन्नई है. अभी पल्लव ने बोला था उनकी यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, IIT मद्रास का. चेन्नई टोल राइज 17,300 फ्लाइट्स कैंसल and over 1,000 trains also cancelled. We come to the center spread. There is north versus south. This is Ashutosh Varshney. He is a Goldman Sachs professor, international studies and social sciences, Brown University, where he also directs the Saxena Center for Contemporary South Asia at the Watson Institute. So you can see his caliber. A clear fault line runs through India's politics. There are historical, ideological reasons for it. Why has the South escaped the BJP's electoral juggernaut? Part of the answer is historical come ideological Hindu nationalism. The BJP's avowed ideology cannot break its link with its anti-Muslim core. Development and governance alone do not provide enough political sustenance. Without antagonism towards Muslims for the historical wrongs committed by Muslim rulers in India's past and the idea of Muslim infidelity to India, the BJP won't be what it is. So he says it is because of historical wrongs and this ideology, this party would not have survived where it is now. But he says why the South has escaped. South now is entirely, now we can see, when you see the map, you can see two distinct signs, north and south. So after each election, there is an understandable popular desire for simple narrative that can explain the results. Sometimes it is possible to do so. For example, it was easy to account for sweeping BJP victory in 2019 elections. But often, as political scientists dealing with multi-factor elections have always known, election results don't lend themselves to clear and simple narrative. So every time it's not possible to give an explanation. Everybody is trying to analyze कि वोट बैंक कितना है, वोट शेयर तो डाउन हुआ ही नहीं, फिर सीट्स कैसे फर्क पड़ गई. तो and why in certain areas a party has won, certain areas party has lost, what is the role of caste, what is the role of money, what is the role of other issues. The BJP can be in power again in Delhi without southern support. That is implied in the cold logic of numbers. A new delimitation can make it even more likely. But can the BJP afford to ignore legitimate southern complaints? The question has a haunting quality. अगला इलेक्शन भी जीत सकते हो कह रहा है. अगर ये नॉर्थ के स्टेट जिन्होंने वोट किया है तो ये फिर से पावर में आएंगे. बट कैन यू इग्नोर द साउथ? व्हाट आर द इश्यूज ऑफ द साउथ? सो दैट इज गोइंग टू बी
a nice debate. Maybe someday we can discuss this in our debates also. Politics is too serious a matter to be left to politicians. चार्ल्स डिगॉल इन्होंने लिखा है, फ्रेंच जनरल. ऐसे ही किसी ने कहा था, वॉरफेयर इज टू सीरियस अ मैटर टू बी लेफ्ट टू जनरल्स. वॉरफेयर इज टू सीरियस अ मैटर टू बी लेफ्ट टू जनरल्स. ठीक है, तो उसमें पॉलिटिशियंस चाहिए. तो ऐसे ही पॉलिटिक्स में आम इंसान चाहिए. नाउ वी हैव दिस वेरी नाइस एनालिसिस ऑन द क्राइम स्टोरी. ये yesterday I think a lot of data has been shared on crime, and this is from National Crime Records Bureau, NCRB. ये कोई फॉरेन की एजेंसी नहीं है जो बोल रही है कि हम कह देंगे ये हमारे एंटी हैं. NCRB. It reveals disturbing trends. Why crime is increasing in India? बहुत disturbing है. The recorded crimes against women, children, senior citizens, scheduled castes, scheduled tribes have shown a steep increase. बहुत बढ़ता जा रहा है against women, children, scheduled caste, scheduled tribe and elderly people. 468 people took their lives every day in 2022. Recorded है, जो नहीं रिकॉर्ड वो अलग है. हमारे यहाँ कैसा रिकॉर्ड होता है आपको पता है. तो every day 468 people are killing themselves by suicide. Cyber crimes have gone up by 25%. साइबर का ये बड़ा डेंजरस फील्ड है. इस पे आगे भी बात करेंगे हम साइबर क्राइम से. Most of this cases are taking place in cities. That is where the melting pot is. People come from various places. City की अलग dynamics है. It says women, for example, find it very difficult to report abusers in their close circles. Husbands, fathers, partners, family members, friends, for that reason. The true extent of violence against children is likely to be greater than the estimated. So women and children both find it very difficult to complain against their own father, against their own brother, against their own relatives, friends. तो ये those cases don't get reported. फिर ये भी बोला जाता है to hush it up because फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी, फैमिली का नाम खराब हो जाएगा. तो lot of effort is put in hushing up even if something has happened. The growing incidence of cybercrime, the NCRB report underlines the seriousness of this threat. Call for law enforcers to stay ahead of the curve. क्रिमिनल आगे बढ़ते जा रहे हैं, जमतारा टाइप वो आगे बढ़ते हैं. जब तक पुलिस को पता चलता है वो और 4 स्टेप आगे चले गए. सो जो कर्व है क्राइम करने का, स्पेशली साइबर में, द लॉ एनफोर्समेंट मस्ट स्टे अहेड बट दे विल नेवर बी. इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट. Across the world, data is becoming an important tool for ensuring public safety. Data is the new oil. उसके बिना गुजारा नहीं. बट हमारे यहाँ आप कोई चीज़ के लिए अप्लाई करो, आपने कहीं प्लॉट के लिए अप्लाई कर दिया, कोई शॉप के लिए अप्लाई कर दिया, कोई सिम कार्ड कुछ अप्लाई किया है, आपको सबके साथ your number is shared, your email is shared. This is really serious. So data, the NCRB cannot be impervious to conversations on the use of digital systems for crime prevention and investigations. So it must step up to new challenges and find ways to effectively address old ones. तो ये है the crime story, increasing crime and the type of crimes also आगे भी है. But sad part is why so many people are dying, and उस पे आगे मैं बताऊंगा who are these people who are committing suicide, what section of society feels helpless, or because a person commits suicide when you feel कि सब बंद हो गया, सब कुछ खत्म है, there are helplines, everything, but maybe they're in a state they really can't reach out to anyone. Raja Mandla by Raja Mohan, I enjoy his articles, his language and analysis. India and geopolitics of AI, artificial intelligence. He says Delhi's political posturing on technological developments in the 1970s set India back badly. It can't afford to make the same mistake again. तो हम पीछे हटते गए. We missed the industrial revolution because Mughals and the British, they didn't bring much technology, and then we missed the bus even in 70s, 60s and 70s. We were trying nuclear energy, ISRO, AIMS and IITs, but we really didn't pick up on technology. So now
on AI, we cannot be left behind. We cannot be left behind. So, all current discussions on the geopolitics of artificial intelligence is inevitably hark back to nuclear experience. As the world recalls the lessons from nuclear age to cope with the problems and opportunities presented by AI, India too could benefit from a reflection on its complex nuclear history. So ये है he is connected AI with nuclear energy. We had first woman on this glacier. Now we have a first medical officer on the glacier. First woman medical officer is reached the glacier. Gitika Kaul, she's cleared her induction training, and she will be deployed. She will be deployed on the Siachen Glacier. So good news. Earlier we had a captain from engineers, and now we have a captain from Army Medical Corps. Now we'll come to the explained page. Yeah. This flood, that flood. Ye for Pallav Jha and others from IIT or those who are in South. This flood, that flood, deluge in Chennai and memories of 2015. 2015 also was terrible, terrible floods. Even Officers Training Academy was flooded. Even उनकी भी ट्रेनिंग बंद हो गई थी. खैर कैडेट्स ने तो मौज करी होगी कि कुछ दिन कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, बट सिचुएशन वॉज वेरी बैड. सो पीपल आर कंपेयरिंग 2015 एंड 2023. सो व्हाट हैज हैपेंड टू अस? क्या हो गया? व्हाई आर सिटीज? आई वाज इन बैंगलोर एन ईयर बैक एंड द एंटायर सिटी वाज ऑन स्टैंड स्टिल. इतनी खराब हालत मैंने अपने प्यारे बैंगलोर की नहीं देखी थी. जो ऐसे ही दिल्ली, थोड़ी बारिश, दिल्ली की बुरी हालत. बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास. तो इस पे आएंगे हम आगे. व्हाट हैज हैपेंड नाउ? व्हाई वी आर नॉट एबल टू मैनेज आवर रिजर्वायर्स? व्हाई द नेचुरल फ्लो, पानी का नेचुरल फ्लो है, ठीक है, अर्थ की एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है पानी के बहाव की. व्हाई दैट इज ब्लॉक्ड? सो ऑल दिस एंड मोर, बट आवर सिंपथीज आर विद पीपल इन चेन्नई. मिचोंग is the name of the cyclone which has hit Chennai, but now it is petering off towards Andhra and other places. So now we come to Sensex, GDP and the elections. Does Sensex, GDP and elections, are they correlated? Sensex ने तो thumbs up दिया एकदम. People started buying like anything because they felt कि now we will have a stable government. So the shares which they thought which will give them a good money later on, there was heavy buying in that. So share market to Sensex, but Sensex doesn't reflect because I think 99% Indians have no interest in Sensex, and or maybe more than 90% at least. I have no shares, so I have no idea. GDP and elections, are they correlated? I don't know. So this is by Udit Mishra. He writes on economics. So let us see. I will send this article to you whether they are related or not. Karni Sena chief has been killed in a brutal attack yesterday, but it's a crime, so we don't cover it. But ये organization क्या है उसके बारे में दिया हुआ है. कल परसों we had covered the other organization. जैसे हमास का हमने कवर किया था, आपको बहुत डिटेल में दिया था हमास क्या ऑर्गेनाइजेशन. Indian economy to be third largest by 2030. That is America, China and India. This is by S&P Global 2030 tak. Another, you have to wait for 7 years. Okay, so here we finish with the Indian Express. Hindu has lot of news because the South Indian newspaper initially published from Chennai. Michong makes landfall in Andhra Pradesh, wreaks havoc. So ये कंडीशन है, ये NDRF के पर्सनल है एट सूर्य लंका बीच इन बापटला में ये. बट सी द क्लाइमेट चेंज. ग्लेशियर shrunk by 1 meter in a year in a decade. So this is
2011-2020 decade, the warmest ever recorded in history, saw the largest number of deaths from extreme events, said a report of World Meteorological Organization on Tuesday. The agency attributed this to an improvement in early warning system. So early warning system improve हो गया cyclones वगैरह को लेके, floods को लेके. So there are people are countries are able to take precautions. All countries take precautions. But this is a decade of extremes. This is a decade of extremes, and 2023 is the hottest year ever recorded in human history. Yeah. Look at this. Wide web surging electrical incidents in Bangalore. तो ये बैंगलोर तो बहुत सही है. इनको फोटो देखनी चाहिए दिल्ली की, जींद की, रोहतक की, लखनऊ की, कानपुर की, बरेली की, हैं, मुरादाबाद की, फिरोज़ाबाद की, फरीदाबाद की, भोपाल, कहीं भी हमारे शहरों में ये है. दिस इज अ स्टेट ऑफ आवर सिटीज. So, because of an unfortunate accident, Bangalore is in limelight. But this electrical wiring, cable wiring, telephone wiring, और पता नहीं क्या क्या wiring, and you never see this anywhere else. ये सिर्फ हमारे यहाँ नज़र आएगा. यूरोप में, अमेरिका में आपको वायर नज़र ही नहीं आएंगे. होंगे तो there'll be just electric wires, very clearly visible. So these are all cause for accidents and fires, electrocution. Now we come to the editorial. We are here. Honest reckoning. Major world economies seem unwilling to move away from fossil fuel. तो ये है, आप COP 28 कर लो, COP 33, COP 50 भी होगा. But major world economies are unwilling to move away from fossil fuel because suddenly you can't. क्या हम पेट्रोल डीजल जलाना बंद कर सकते हैं? Or can we stop using coal? Not possible. So the boundary wall enclosing discussions around global climate is 1.5 degrees Celsius, or the average increase in global temperature since pre-industrial times. Now that 1 degree Celsius is crossed, all the wrangling underway at the climate summit in Dubai is to cap the half degree. तो 1 डिग्री तो हो चुका है. हम तो जो 0.5 है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर बात चल रही है. Global pledges to cut emissions are insufficient to achieve this. Current estimates are that no limit warning to 1.5 degrees Celsius, the world requires 3 times more renewable capacity by 2030 or at least 11,000 gigawatt. 7 साल में ट्रिपलिंग चाहिए. कहाँ पॉसिबल? इम्पॉसिबल. Impossible is the word. So your future is going to be in dire states because of rising temperatures, unseasonal rains, floods. Yet these will keep increasing. It turns out that so far 118 countries have endorsed the pledge, and the 2 major countries, India and China, have so far abstained from signing. हमने साइन ही नहीं किया, इंडिया चाइना ने. So this looks very, very difficult. Then we have on Chennai, shared blame. Only the cyclone is not responsible. We cannot blame the cyclone for this condition. Our city planning, our basic amenities, our drainage systems. ये गुड़गांव मिलेनियम सिटी सच ये तो हमने बनाया. चेन्नई तो चलो, चेन्नई, Delhi are very historical. Bombay, we can blame the British, we can blame the Mughals, we can blame anyone. But Gurgaon and all have been created by us. Gurgaon, Faridabad. All drains are choked with plastic. All drains. So come rain, there is no water flow at all. So just blaming the cyclone is not enough. And we will discuss आगे भी. What about today 6 December is a death anniversary of B.R. Ambedkar. बाबा साहब अम्बेडकर की आज डेथ एनिवर्सरी है. ही डाइड इन 1956. तो उनके ऊपर भी है एन अम्बेडकर टच. आई विल सेंड यू समथिंग ऑन हिम टुडे इन द टेलीग्राम इफ आई गेट अ गुड आर्टिकल ऑन हिज आइडियोलॉजी, हिज फिलॉसफी. या
अ जर्नी टुवर्ड्स अ प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड. ये प्लास्टिक की बोतल है एक पानी में. सो दिस ऑल्सो इज आई थिंक अ फाइट. I don't know about the world, but India is losing it rapidly every day. There is just no control on use of plastics, and we have banned many places, single-use plastic. बट एनी वेयर यू गो टू विलेजेस. मैं तो गाँव की गंदगी देख के हैरान हूँ. गाँव जो निर्मल होते हैं, जो स्वच्छ होते हैं, वहाँ पर भी कूड़े के ढेर मिलेंगे, प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की उड़ रहे हैं प्लास्टिक इधर से उधर. So the journey towards a plastic-free world. What did the Intergovernmental Negotiating Agency under the UN, its third round negotiations discuss? How do they aim to end plastic pollution? What did the zero draft say and was it endorsed? तो ये UN agency है. They are trying to control the world over. INC, Intergovernmental Negotiating Committee under the UN Environmental Program. It met in Nairobi for 3 days. But we are ourselves losing the battle. What to talk of the rest of the world? This is of course a very interesting topic. Science का topic भी है. How does GPS work? Global Positioning System. इसके बिना कोई ship, कोई जहाज उड़ता नहीं. ठीक है. And it gives you accurate. These days on your phone you can see a flight which is taking off from US coming to India 16-18 hours. You can track down its location to a kilometer कि अभी कहाँ पर है, किस टाइम पे, किस हाइट पे, कहाँ पर है. So and we really can't move without GPS even in our cars too. All new cars come with pre-fitted global positioning systems. So GPS has changed our expectations and where we are in our sense of place. The major sectors which employ the technology include agriculture, construction, surveying, logistics, search and rescue, air travel, meteorology, seismology and military operations. देखा? Just see. अगर कोई ऐसे कोई लेक्चरेट आ जाता है आपके पास तो the kind of application. India mooted its own navigation satellite in 2006. And now it is recrested navigation with Indian constellation Navic, NAVIC. So very soon I think we will be using our own system. Already we are using it in many ways. So initially led by US, then GNSS by Russia and Navic by India. China also I think has its own GPS. तो कैसे काम करता है ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. नो योर इंग्लिश, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इट इज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. वर्ड ऑफ द डे, इनैनिटी. The sound and the feel of a newspaper. Israel strikes Khan Yunis in a bloody new phase of war. तो वहाँ तो UK का I already told you. Yes. Now Afghan Taliban must reform before full diplomatic ties. So China has ties, and China has increased the size of its embassy. It has signed many contracts, MOUs with Taliban. But China has said, in fact, no country has given diplomatic recognition to Taliban. 2 साल होने वाले. ठीक है, हो गए 2 साल अगस्त में. बट nobody has. So China has told that unless Taliban reforms, they will not get full diplomatic. Myanmar army chief, military dictator, says chief seeks political solution with rebels. ठीक है, तो ये कंडीशन है जनरल मिंग ऑन्ग हैंग की. So he has asked for ethnic armed groups battling the military across the country to find a political solution. So they are also facing heat from rebellion by many groups which are taking on the Myanmar army. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि उनकी फौज के पीछे लोग पड़े हुए. So here we finish with this. We move on to Times of India.
काफ़ी कुछ है इसमें, बट आई थॉट आई जस्ट मूव स्ट्रेट टू दिस. सो बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स. ये दोनों. लेट्स सी द आर सिटीज दैट सिंकिंग फीलिंग. तो ये हमारे शहर हैं. चेन्नई फ्लडिंग कम्स ऑन द हील्स ऑफ दिल्लीज, अहमदाबाद, बैंगलोर एंड मुंबई. इंडिया विल सून बी द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी, बट मस्ट इट ऑल्सो हैव थर्ड रेट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये है, इकॉनमी तो थर्ड बना लोगे, अनाउंस भी कर दोगे हम विश्वगुरु बन गए, हम ये बन गए, बट तुम्हारे शहरों का क्या हाल है? Will the foreigners come and stay here? See the air pollution, water pollution, and the way urban chaos. So this actually we lose a lot of our GDP because of poor urban infrastructure. So Chennai on 4th and 5th experienced 7th devastating flood in the last 50 years. पिछले 50 साल में ये 7वीं बड़ी फ्लड है चेन्नई के अंदर. हम भूल जाएंगे थोड़े दिन में. In 2015, more than 289 lives were lost and inundated 2 million houses. ठीक है, तो इस बार का क्या होगा पता नहीं है. तो he has given this encroachment है, urban chaos है, times are changing, then connected water bodies, plans are only on paper, disappearing wetlands, तालाब, जोड़, कुएं, जो शहर में या कहीं पे जान होते हैं जहाँ पानी, बारिश का पानी अपने आप नेचुरली, वो सब गायब हो गए, वहाँ बिल्डिंगें बन गई. मनी कांट बाई सेफ्टी. ये बैंगलोर में भी देखा था, हाई एंड टॉप एंड कई करोड़ का एक फ्लैट है, वो सब ट्रैक्टरों पे अपने घर से निकल रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के. सो मनी कांट बाई यू सेफ्टी. ये तो क्लियर है. यू मे बाई द बेस्ट पॉसिबल अपार्टमेंट इन द वर्ल्ड इन मुंबई और बैंगलोर और दिल्ली एंड इट कैन स्टिल बी फ्लडेड. So false choices over development. So then comes politics. ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं. But this is a state, poor infrastructure. Chronicles of death. This is taken from the NCRB report. Suicide is rising trend in India, including among the young. So what as they have realized कि most people who are committing suicides are daily wage earners, farmers, students. So national average is nearly 500 per day. 500 बंदे हर रोज. What does this say? Chronic levels of stress remain unaddressed. The three big gaps are poor mental health infrastructure, grey areas in relevant laws, and taboos that stop people from seeking help. Taboo है, बीमार है, mental. घर वाले कहते हैं mental है. ये सुनते थे हम कभी कभी. तो you don't ask help. You know, अंदर ही अंदर लोग फिर ऐसी स्टेट आती है. देन रेलिवेंट लॉज में बहुत ग्रे एरियाज हैं एंड मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर कंडीशन में. सो ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है. ओवर third of all who died were farmers, daily wages and students. 13,000 students. Then there are suicide clusters. जैसे झुग्गी झोपड़ी को हम क्लस्टर कहते हैं. कोटा इज अ सुइसाइड क्लस्टर. और जाओ कोटा फैक्ट्री, कोटा इज सुइसाइड सेक्टर. इस साल ऑलरेडी 23 यंगस्टर्स हैव टेकन देयर लाइफ. सो मोस्ट ऑफ द 35% of deaths are in the age of 18 to 30, which is the young people. That's part of the demographic dividend pushed to the edge. तो ये हमारी demographic dividend है if most of them are taking their own life. So please no stress. मैं हमेशा कहता हूँ ज़िंदगी बहुत बड़ी मैराथन है, हताश नहीं होना, हताश कभी नहीं, बहुत बड़ी मैराथन है. And I have seen in my own life some amazing turnarounds in fortune and luck. So इसलिए लगे रहो, ठीक है. Then we have on the COP28 में बोल रहा था, आपको बताऊंगा. COP chief and oil boss flip flop on fossil fuel shows switching to clear fuel won't be easy. तो ये सुल्तान अल जबार who is also boss of Abu Dhabi National Oil Company, and he says there was no science showing that the phase out of fossil fuels was going to limit warning. There was an uproar. Al Jaber backtracked, but his flip-flop points to important questions. Phase out or phase down? Phase out करेंगे या phase down करेंगे? But who phases down first?
इज देयर मनी ऑन द टेबल, व्हाट एल्स इज बीइंग डन। सो ये फॉसिल फ्यूल्स को लेके बातें होंगी, लेकिन ये फेज डाउन होगा या फेज आउट होगा। फेज डाउन ज़्यादा लग रहा, फेज आउट तो कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। ऐसे ही पोअर इकोनॉमीज विल देन कीप यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, पोअर इकोनॉमीज, बिकॉज मैं ये पूरा सर्कल आपको समझा चुका हूँ पूरा। जिसने मेरी पुरानी क्लास अटेंड करी है, आप किसी ग्रुप डिस्कशन में, किसी इंटरव्यू में, या व्हाट्सएप अंकल आंटी आते हैं, कहीं पे मार नहीं खा सकते इफ़ यू अंडरस्टूड दिस साइकिल। बड़े अच्छे से आप समझा सकते हैं। दिस इज द लास्ट बिट बाय जुग सुरैया। Ramayana and Mahabharata are too epic in scope to be taught. They are very, very big epics, and different parts have different mythological intake of the same central story. अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने क्रिटिक किया, लिखा है। तो what part will you teach? कौन सी पढ़ाओगे, जो नॉर्थ वाली है, सेंट्रल वाली है, या साउथ वाली है? किस एरिया की, हर लैंग्वेज की अलग है। सो अगेन, हिस्ट्री सेड मोटर मैग्नेट हेनरी फोर्ड इज बंक, therefore consigning history to a dustbin of well history. But if Ford dismissed history as has been, NCRT is proposing to treat the study of past as never was. So Henry Ford, a very, very big guy who made this Ford vehicles, Ford trucks, was the biggest industrialist the world has said. He has said history is bunk and it should go, इसको बंद करो, इसकी कोई जरूरत नहीं हमारे को. But we are going, NCRT is going back to teach you history of which we don't have much evidence. And Mahabharata and Ramayana teach you not only Indians but all humankind. They impart profound insights into interwoven strands of ethics, morality, obligation of duty, and imperative of compassion. Duty क्या है, morality क्या है, ethics क्या है, and how do you कंपैशन, सब में कंपैशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, एम्पैथी, कंपैशन। चलो, सो दिस इज इन लाइटर वेन लिखते हैं जुग सराया। सो वी एंड इट हियर। लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग मोर इंटरेस्टिंग, बट आई विल टेक फ्यू ऑफ योर क्वेश्चंस। हेल्थ पे है, हेल्थ एंड एआई पे दे हैव कवर्ड इट अ लॉट। दिस इज अ गुड पेपर, आई हैव नथिंग अगेंस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया। ओनली थिंग इज ऐड बहुत आती हैं, बहुत ज़्यादा ऐड आती हैं, एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ लोकल न्यूज़, बिकॉज दिस इज लोकल एडिशन, ये यहाँ का एडिशन है, तो यहाँ की लोकल न्यूज़ आती है। चलो, नाउ लेट मी टेक फ्यू ऑफ योर क्वेश्चन। वी हैव 111 लाइव लर्नर्स नाउ, गुड। गौरी, sir, I am in bus stop watching your class. Thank you very much. As per government, 39,950 students died by suicide in 2 years. Boy, God, this is statistics by Pallav, IIT Madras. Rishabh Avasti, sir, how film actresses fool people. Mountain Dew advertisement that can remove fear. हाँ भाई, तो हम लेते हैं, फिर हम लेते हैं। प्लास्टिक की बोतलें इतनी मिलती हैं, इतना प्लास्टिक पड़ा हुआ, ये वर्कर भी पीते हैं भाई, हम भी ऋतिक रोशन, बच्चे पीते हैं, हम भी ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सॉरी, क्रिकेट प्लेयर द ग्रेटेस्ट, भारत रत्न ले लेके भी ऐड, ये गेम बना लो, टीम बना लो, इस पे आ जाओ, उस पे आ जाओ, रियली टेरिबल। आई हैव नो वर्ड्स। इसीलिए मैं कहता हूँ, प्लीज रिमूव पोस्टर्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स एंड फिल्म स्टार्स फ्रॉम योर रूम्स। दे आर नॉट योर हीरोज, दे आर नॉट योर आइडल्स, यू हैव वेरी लिटिल टू लर्न फ्रॉम देयर लाइफ। ठीक है कुछ सीखे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी, बट दे आर नॉट योर हीरो, स्पेशली दोज हु विश टू ज्वाइन एज ऑफिसर्स। विपुल यादव, सर, मेरे माँ पिता बहन के अलावा मेरे चाचा बहुत सारे विलेज हमको पागल बोलते हैं। वन डे आई विल टॉक टू यू इन एएमए अबाउट। हाँ ठीक है, ऐसे ही होता है। स्टैंड अलोन, स्टैंड स्ट्रेट, फाइंड योर ओन पाथ। ठीक है, हाँ मैरिज सीजन, वैशाली आपने सही कहा, इतना प्लास्टिक पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं। हर चीज में प्लास्टिक है, दही भी प्लास्टिक, गुलाब जामुन को भी प्लास्टिक में डालना है, दाल को भी प्लास्टिक में डालना है, पानी भी प्लास्टिक के अंदर है, हर चीज प्लास्टिक में।
बहुत ज़्यादा प्लास्टिक. So missing your news analysis for 2 days is looks like missing spices from vegetables. So it's impossible for army to kill 4 terrorists in Kashmir, but in cinema, how director fool Tiger Shroff killed? Yeah, हमारा सिनेमा भी बहुत ज़्यादा. So Jai after medical out in Air Force, finally fit in army, waiting for final merit list. I also want to be commissioned. Last in the session discussion about Agniveer scopes to get commission. अग्निवीर का भैया मैं एम नॉट वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दिस स्कीम. ठीक है, 4 साल के बाद आपकी क्या सिचुएशन होगी मैं कह नहीं सकता हूँ. ठीक है, एट प्रेजेंट व्हेन यू आर इन 4 years इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यू कैनॉट अप्लाई फॉर एनी कमीशन, ACC एंड ऑल. जब परमानेंट हो जाओगे तब आएगा, तब some 1 or 2 lucky people get through, but I don't know. 13,000 students opted out of IITs and IIMs in just 5 years. 13,000. So do you also feel nostalgic sometimes about the past? It's natural, but not much. Navik is installed in iPhone 15 Pro. Very good. GPS developed by US. Plastic ka, it is us, the shopkeepers, the manufacturers, and law enforcement. All of us are culpable. Another case of suicide by a 21-year-old girl in my area. She put fire in room where her brothers beat her boyfriend in front of her. Her boyfriend slapped the girl, so her brothers beat him. ये भी एक इशू है काफ़ी बहुत. हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप्स इन यंग एज, हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज रिलेशनशिप्स आर हैपनिंग very easily because of availability of applications and web and WhatsApp and all that. Is artificial intelligence dangerous for humans? Is it right or wrong? I don't understand. देखो इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है. इट इज़ हेयर टू स्टे. इट इज़ हेयर टू स्टे. ठीक है, तो उसके यूज़फुल तो बहुत होने वाला है. हेल्थ सेक्टर में बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़बरदस्त. एजुकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, बट देर कैन बी सर्टन pitfalls also. वैष्णवी के पास बहुत किस्से हैं. ईगो भी प्रॉब्लम है. आई विल कम टू बिहार. ओके, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो that how, why and when did the society become patriarchal. The core reason behind this, as far as I can think, is pregnancy of women. Want to know your views. I don't know, Pallav Jha. पूरी patriarchy is everywhere, but there are societies which are matriarchal in nature. There are societies in Kerala, in Meghalaya, बट हमारा नॉर्थ इंडिया बेल्ट तो टोटली पैट्रियार्की है. ये क्यों हुआ है, इस पे आई डोंट रियली नो, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन. पहली बार मैं ये वेरी नाइस क्वेश्चन. लेट अस से टुडे इज महापरिनिर्वाण दिवस. वाई दिस सुसाइड सर आर हैप्लेस पीपल. वही इश्यूज है ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जॉब के इश्यूज हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, पैसे के इश्यूज हैं. एंड हेल्थ इज ट्रीटेड एज ए, मेंटल हेल्थ इज ट्रीटेड एज ए टैबू. डॉक्टर्स भी नहीं है. अगर आप किसी डॉक्टर सिविल में जाओगे, जी मुझे मेंटल हेल्थ इशू है, कहीं यार बाहर चले जाओ, देर आर नो डॉक्टर्स. नो बडी अंडरस्टैंड दिस पार्ट. A big problem is getting bigger and bigger as time passes. Example being a number of road accidents. Yeah, this is Pallaja. More road accidents, more deaths because of disease. So everything is becoming more and more.
The army has a fair and transparent system of rectifying itself. It has a robust redressal mechanism which will address various grievances. Okay. What is your opinion of rise of gangster? पहले भी रहे हैं गैंगस्टर्स पहले भी रहे हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग गैंगस्टर रहे हैं. सो ये तो चोर और पुलिस के बीच में तो लड़ाई चलती रहती है. सर आपको देखते देखते मैं भी अब सुबह 5:30 बजे एक्सरसाइज करने जाता हूँ ग्राउंड पे. यू हैव विमेंस अमाउंट. ये मैं बता रहा हूँ आपको. आई एम टेलिंग यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स. एंड आई एम हैप्पी वी आर एबल टू डू दैट. माई रूटीन हैज टोटली चेंज. वेरी नाइस पीपल. चिल्ड्रन विव या. अब्दुल शाहिद, सॉरी टू यूज तुझे बट तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं. ठीक है यार, कोई बात नहीं. दोस्तों में तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो. सो आई हैव आंसर्ड. लेट मी सी अगेन नीचे. लेट मी सी. तो ये टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ. एंड थैंक्स टू देवशीष एंड अक्षय. दे कीप सेंडिंग दिस आर्टिकल्स. मैं आपके पास भेजवा देता हूँ. इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पीक. रोहित डागर. फिर आप BOCC कोर्स करो रोहित. इफ यू आर अनेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ 10 पीपल, उसके बिना ऑफिसर नहीं बन सकते. सो एनी सोल्जर और ऑफिसर हु इज नॉन अल्कोहलिक, इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू मेक लिकर कार्ड. नो, वो कैंटीन से आ जाएगा, आप उसको जला दो. कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा लिकर कार्ड कहाँ है. इट इज नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट. एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल. There are a lot of people who don't drink and don't buy liquor from canteen. Good morning from J&K. Good morning, Roshan. People now realize the Indian commando when movies are coming on them. Okay. Yeah. Admiral अरुण प्रकाश का बहुत जबरदस्त पॉडकास्ट है. दिस मैन बॉर्न इन अनंतनाग, कश्मीरी है, होम स्कूल्ड, क्योंकि उसके फादर छोटी छोटी जगह पोस्टिंग होती थी, वहाँ स्कूल भी नहीं होते थे. एंड वेंट ऑन टू सॉ ए मूवी एयरक्राफ्ट कैरियर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. सोचना मैंने यार नेवी में जाना है, एविएटर बनना है. कश्मीरी लड़का बन गया. एंड फाइनली रोज टू बिकम द नेवल चीफ एंड टुक पार्ट इन 71 वॉर विद एयरफोर्स. गॉट अ वीर चक्र. अमेजिंग. मुझे बहुत मज़ा आया. इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट पॉडकास्ट विद एडमिरल अरुण प्रकाश. रोशन, सर मुझे IMA में जाना है पर थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो रहा है अपने पे, क्योंकि कभी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया. तो पढ़ाई करो. IMA जाना है तो पढ़ाई करो. पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, पर्सनैलिटी भी करनी पड़ेगी, इंग्लिश भी ठीक करनी पड़ेगी. चंद्रामणि, सर आई एम सेलेक्टेड इन यूनिवर्सिटी टीम ऑफ फुटबॉल एंड टुमारो आई एम गोइंग टू राजगढ़ फॉर ट्रेनिंग कैम्प, देन वी विल गो टू मैंगलोर टू प्ले मैच. वेरी गुड, वेरी नाइस. In army canteens, cricketers, film actors, posters displayed with alcohol. Sir, do you think it's yeah, it is impacting. जब क्रिकेट प्लेयर कहता है मेक इट लार्ज, उस बैट लेके जा रहा स्टेडियम में, फिर पीछे मुड़ के देखता है, कहता है मेक इट लार्ज, तो लगता है हाँ यार हम भी लगाओ भाई, लार्ज लगाओ फटाफट. इट तभी तो इतने करोड़ों रुपए इनको देते हैं. somebody should check their बैंक अकाउंट्स की भी तेरे को ये इनके. एंड देन there are ads in which women are used liquor ads में, कि ये देखो बंदा है ग्लास में है and all women are coming towards him. So ये this image creation which promotes young people to pick up alcohol. I'm preparing for service entry and I'm getting much beneficial from your news analysis. Thank you, Shivam. Squad leader Manisha Padi became first ADC to Governor of Mizoram. Okay. Yes, BOCC course will come now. But हाँ, पक्का आएगा.
there's a river in Africa where all electronic waste is dumped, and in that area almost 5 to 7 people die every day due to radiations. The first hero of any boy should be his father. First love of every girl should be his father. वाह योगेश, ज्ञान दे रहे हो यार. या अनुराग अवस्थी, आई एग्री विद यू. या चलो, we've covered lot of ground, so please join this telegram channel where I will post these articles, and I'm going to be regular till I go to Bangalore for a corporate event. वहाँ देखते हैं, बैंगलोर में बहुत बच्चे मुझे फॉलो करते हैं जिन्होंने BOAC कोर्स किया है, BOCC कोर्स किया, तो I'll probably meet them. थैंक यू राही कपूर. राही, हाउ टू हैंडल प्राइवेट लाइफ, ये बात करेंगे AMA सेशन में, ठीक है. हाँ, इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज, बोलो जुबान केसरी, ये पेल रहे हैं आजकल पूरा. या दैट रेहान फजल पॉडकास्ट इज अमेजिंग ऑन सैम मानिक. ये 2-3 पॉडकास्ट अगर नहीं देखे, पाकिस्तान का पता नहीं क्यों कम चला है. मुल्ला एंड मिलिट्री, then with Rehan Fazal and with Admiral Arun Prakash. These are 3 of my best podcasts. चलो, तो 14 सर नॉर्थ ईस्ट कब आ रहे हो, देखते हैं मिश्का कब आएंगे. अर्पित सर, मेरा 3rd अटैम्प्ट है सर, और अभी मैं मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर रहा हूँ सर पहले से. चलो, ऑल द बेस्ट अर्पित सैन, ऑल द बेस्ट टू यू. चलो, सो प्लीज़ लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, and please subscribe to this new YouTube channel, and ensure your friends, your family, they also subscribe to this. ठीक है, चलो, all the best to you, have a great day, and keep smiling. ठीक है, चलो, शाबाश, all the best, thank you.